Hello dear students, today we are solving the ISI MSTAT question paper of 2024. If you have any questions and doubts, just text it to me. For classes also, you can inquire me here directly. So let's just solve it first. Assume that the length in minutes of a phone call of a digital exponential as usual density function is given. When the phone company calculates the length of a phone call, it's always considered the largest. For example, 22.09 minutes long phone call will be having a call length of 23. It's like a GIF structure. Suppose that the data of the length of the n phone calls is T1, T2, Tn. Based on this, compute lambda. Okay, so here we go. So the first part first, let us denote that x1, x2, xn be the length of the calls. Okay, and T1, T2, Tn be the density function of xi. Okay. So f of x lambda is lambda e to the power lambda x is greater than 0. Okay. So the relationship between xi and ti is ti gif of xi. That has been given directly again. Okay. So if I proceed in this way, so ti equal to k. If I just given that ti equal to k, any constant integer which lies between the interval k minus 1 to k. So the probability of ti equal to k is probability it lies between k minus 1 less than xi less than k, this part less than equal to rather say. So अब यहाँ पर हम लोग cumulative distribution function का इस्तेमाल करेंगे CDF for the exponential distribution. So ये हो जाएगा अपना fx x lambda 1 e to the power minus lambda x and we can express our probability as तो जो p का जो हम लोगों ने यहाँ पर calculation किया था, so that will be p of fx k of lambda fx k minus 1 of lambda. ठीक है, ये हो गया. अब इसी को अगर सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो क्या आ जाएगा. सो p of k minus 1 लेस देन xi लेस देन इक्वल टू k, ये अपना आ गया 1 माइनस e टू द पावर लैम्डा k एंड 1 माइनस e टू द पावर लैम्डा k माइनस 1. खत्म. इसी को अगर सिंप्लीफाई कर देंगे सो दिस विल बी कमिंग e टू द पावर माइनस लैम्डा k माइनस 1 minus e to the power lambda k. Now once you reach to this situation, then it is easier for us to proceed to the next level of this thing. So ti of k is e to the power minus lambda k minus 1 into 1 minus e to the power minus lambda. Okay, so this is a likelihood estimator. So let L equal to pi of ti equal to ki. I equal to 1 to n. So ki equal to observed value of ti. Substituting into the PMF में अगर डाल देंगे तो यही हो जाएगा e to the power minus lambda ti minus 1 into 1 minus e lambda. ठीक है, एकदम बच्चों की तरह करेंगे इसको. सो फिर टेकिंग नेचुरल लॉग ले लेंगे और करेंगे इसका बढ़िया वाला सॉल्यूशन. ठीक है. सो नेचुरल लॉग बोथ साइड से एल ऑफ ये हो गया लैम्डा और t1 t2 tn अपना हो गया. सो दिस इज माइनस लैम्डा ti माइनस 1 प्लस लॉग ऑफ 1 माइनस e टू द पावर माइनस लैम्डा. ये हो गया. इसी को अगर सिंप्लीफाई कर देंगे तो माइनस लैम्डा ti माइनस 1 प्लस एन लॉग 1 माइनस ई टू द पावर माइनस लैम्डा. तो टू फाइंड द MLE वी नीड टू मैक्सिमाइज द लॉग लाइकलीहुड फंक्शन. सो इन दैट केस dl d लैम्डा हम लोग का आ जाएगा. दिस इज माइनस ti माइनस 1 आएगा एंड एन ई टू द पावर माइनस लैम्डा और ये हो गया ये दिस इक्वल टू 0. बेसिक है. सॉल्व करने से यहाँ पर हम लोग को मिल जाएगा summation of ti minus 1 n e to the power minus lambda this. So rearranging the isolate s, we get s by n is 1 e minus lambda. So that is, you can take it this as y अगर ले लेंगे, this as a let it be y. तो इस बार सिर्फ सिंप्लीफिकेशन करेंगे. थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है. सो s by n 1 minus y equal to y. So s by n y
sy by n. So y equal to s by n 1 plus s by n. So s by s plus n. Okay, this is the part now. So finally e to the power minus lambda equal to s by n था, ठीक है. टेकिंग लॉगरिथम माइनस लैम्डा इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ एस बाई एस प्लस एन. तो ये हो जाएगा लैम्डा इक्वल टू माइनस लॉग, सॉरी प्लस, ये लैम्डा इक्वल माइनस लैम्डा इक्वल टू लॉग, तो ये ठीक है, इसे लिख सकते हैं. सो लॉग इक्वल टू समेशन ऑफ टी आई माइनस वन समेशन ऑफ टी आई माइनस वन प्लस एन. So this is the value of the parameter.